Welcome back to Anjar. So, in our previous interaction, we discussed the concept of social action theory by Max Weber and the how we talked about the types of social action. So, in our today's interaction, we will dealing with the three topics. That is, first is idea of social stratification, then the structure of authorities, and the third will be ideal type of bureaucracy. So let's start with the first topic, that is Weber's idea on social stratification and how Weber idea on social stratification different from the idea of Karl Marx and how he classify class, society, class, status, and power. So here, first we need to understand what is social stratification. That means for social stratification, social related with society and stratification. यानी कि किस stratification यानी कि stratified हो रहा है यानी कि एक तरीके से hierarchy create हो रही है. That is based on power के पे हो सकती है, classes के base पे हो सकती है, या फिर वेल्थ की बेस पे हो सकती है, इनकम की बेस. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आ जाएगी. ठीक है, वो कैसे आ जाएगी कि हम स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में किसी भी बिहाव पे हो सकता है, आइदर बी इट इन द इकोनॉमिक फॉर्म, इट विल बी इन द economic social form, it will be in the political form, it will be in the form of environmental. So let's understand Weber's idea on social stratification. So Weber as takes it as a multi-dimensional issue. So उन्होंने इसको सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं बोला, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने किसको बोला, स्ट्रेटिफिकेशन को बोला है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. सो हियर वी कैन राइट दैट कार्ल मार्क्स have taken idea of social stratification in terms of economics, whereas Weber take it as a multi-dimensional issue and not just in economic terms, because it can be class, status, or power. Now we will discuss class, status, or power ideas of Karl Marx. So for class, he's saying, do not generalize it. It is not just a community. Class is not a community, it is a group of people. अब ग्रुप ऑफ पीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनका क्या होगा, शेयर्ड सिचुएशन होगी, यानी कि एक्शन उनके सिमिलर होंगे और उनका जो पर्पस है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो एक कॉमनैलिटी है उनके अंदर. So here we can write that class is not a community, it is a group of people whose shared situation is a frequent and possible basis of action by that group. He contends that a class situation exists when three conditions are met. So what are these three conditions? First, he, as a keyword I am saying, that is common, number of people having in common. Next will be, he represent it in the economic interest. The next, he represent it in the form of commodity or labor market. So now we can write three conditions that needs to met the situation of class. So first, you can write number of people having in common is specific causal component of their chances insofar as the next component is represented by exclusively by economic interest in the possession of goods and opportunities for income. Then third will be represented under the condition of commodity or labor market. So I hope now you understand the definition of class as discussed by Max Weber. The next we will talk about status. Status groups are community. कम्युनिटी तो सारी ही है, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं वो मैटर करता है. तो स्टेटस क्या है, एक टिपिकल कंपोनेंट ऑफ मैन है, जिसमें क्या होगा, या तो कुछ पॉजिटिव होगा या फिर कुछ नेगेटिव एस्टिमेशंस होता है. तो एक तरीके से स्टेटस की बात जब हम, तो एक नया वर्ड हम ऑलवेज वहां पे लिखते हैं, ओनर. सो हियर स्टेटस इज रिलेटेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव social estimation of owner. So you can write what Max Weber idea on status. Status groups are communities. So status determined by Weber, every typical component of a man is determined by specific positive or negative social estimation of owner. So here we can write status is consumption of goods produced
and the class is related to economic production and they are not always linked with each other. So यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में कि भाई क्लास क्या होगी, स्टेटस क्या होगा, तो मुश्किल हो गया। अब यहाँ पे एक साइड हमने बोल दिया कि जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्टेटस कहलाता है, और जब भी हम क्लास की बात करते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्शन कहलाती है। लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो क्लास है उन्होंने उसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ली थी। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि relationship between class and status. So he also related with the political way. So here you can write that parties can be found in political order. They are structured, struggling for domination. They are more organized. Weber's social stratification. He also includes social club into it. May not always include class and status group. They are always oriented towards attainment of power. अब यहाँ पे वेबर ने क्या किया, क्लास तो है ही है, स्टेटस भी है, लेकिन उसके साथ एक नया वर्ड जोड़ दिया जो डेट इज पावर। वो पावर क्या होगा, वहां पे जब पॉलिटिकल ऑर्डर होगा और पार्टी के थ्रू उन्होंने इसको समझाया है। सो हियर इन द अबव आइडियाज आर डिस्कसिंग मैक्रो लेवल कम्युनिटीज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बड़े पैमाने पर कोई भी बात कही जा रही है, ये नहीं है कि हम माइक्रो कंसेप्ट ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या है, स्ट्रगल दैट मीन्स दिस फोकस इज मूविंग फ्रॉम एक्टर और इंडिविजुअल एज अ फोकस ऑफ कंसर्न टू लार्जली अ डिपेंडेंट वे डिटरमाइंड बाय लार्ज स्केल forces. So here we can say that he is taking a broader view, not just taking it as a micro level perspective. So that is, we can apply it to the modern era as well because it is a broader perspective, and we talked about class, status, and power in the modern era as well. So our next topic is structure of authority. So when we talk about the structure of authorities, then the Max Weber was known as bourgeoisie Marx. So as you know that in our previous interactions, we will discuss about the concept of Karl Marx, and he raised the concept of that he used the word proletarians, bourgeoisie Marx. So here the same word is used, but in a different sense for Max Weber, that is bourgeoisie Marx. So how we can say that Weber was bourgeoisie Marx? So what is the, so it's, we can clarify it that by saying that by differentiation in their ideas. So Weber was critical of modern capitalism, but he did not advocate revolution. He wants to bring change in society gradually and was not having any hope for middle class or from the masses. देखो अब दोनों के आइडियाज में ये फर्क है कि एक तो चेंजेस दोनों लाना चाहते थे, लेकिन एक का मीडियम था कि वो रेवोल्यूशन की तरह ये एकदम से कुचल जाए। लेकिन जो मैक्स वेबर का बिलीफ था वो क्या था, gradually changes come in society. So both that makes their ideas different. Like Karl Marx having different ideology who wants to bring change in society by revolution, whereas Max Weber does not follow the revolution concept. So he was also critical. Max Weber was also critical of authoritarian political leaders. He played vital interest of nation as above else, including इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी, जो हमारे मॉडर्न उसके बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी पर इन वर्ड्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो मैक्स वेबर ने डेमोक्रेसी को प्रेफर करा, लेकिन क्या आप बता सकते हो उसके पीछे का कारण क्या होगा? इट इज बिकॉज ऑफ डायनामिक्स। जैसे कि मैक्स वेबर हमने अभी पढ़ा था कि वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लेके चल रहा है, उसी तरीके से वो डायनामिक होने को कह रहा है रेदर देन स्टैटिक। सो उसी की कंडीशंस की वजह से जब हम डायनामिक्स को लेते हैं तो क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स आ जाते हैं और उससे क्या होगा, एक डोमिनेशन कंसेप्ट आ जाएगा।
So he noted that authority structures in all social institutions and he analyzed them in all settings. So here I mentioned some keywords on the screen like bourgeoisie, Marx, change in society, dynamism, and settings that must be in your answers while writing. So now we will discuss about the concept of domination. What is domination? A probability that certain specific commands will be obeyed by a given group of persons. It may be legitimate or illegitimate. Legitimate means follow by rule of law, and reasonableness is there, and rational approach must be there, and it will be based on so how legitimacy can be built. So according to Max Weber, it will be on the three bases on which authority is legitimate to followers are rational, traditional, and charismatic. So now you can write about the structure of authorities. Here we mentioned Weber was called as a bourgeoisie Marx. Then you will write Weber are critical of modern capitalism, but he did not advocate revolution. He wanted to bring change in society gradually and was not having any hope from middle class or from the masses. He was critical of authoritarian political leaders. He placed a vital interest of nation as above else, including parliamentarians and democracy. Weber preferred democracy because he offered maximum dynamism and conditions generate political leaders. He noted that authority structures in all social institutions and he analyzed them in all settings. So next the heading will be domination. Here he mentioned a probability that certain specific command will be obeyed by a given group of persons. It may be legitimate or illegitimate, and three bases on which authority followers are rational, traditional, and charismatic. So rational, traditional, and charismatic. These are the three authorities talked about Max Weber. So authority legitimized on rational ground. That is will be based on legal rules. It is called rational authority. The next on traditional ground that has belief in sanctity of immemorable traditions and legitimacy of those exercising authority over them. For example, honor killing. The next will be charismatic authority, and it is based upon charisma, heroism, acceptance, identity. So they are individual actors, thought process, and action. So I hope you understand this concept of structure of authorities. So now we will discussing about our third topic, that is ideal type of bureaucracy. So first we will what are the features or elements that justify bureaucracy. So there are some elements. You can write back the elements or the features of bureaucracy in the comment box. So this topic is not just only in sociology as an optional, but you can use the points from here in the ethics paper as well, and in the governance model as well. So the some elements that were that in bureaucracy, specialization will be there, and division of labor with tasks distributed as a official duties. So I hope you understand that यहाँ पे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, या फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो आप कि डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कि ऐसा तो है नहीं एक ही इंसान सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर देगा, तो उसके लिए क्या है अलग अलग को काम दिया गया है. देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हायरार्किकल व्यू होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी होगी. नेक्स्ट विल बी, अब ये क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल बॉडी होगी या फिर, ऑब्वियस सी बात है इट इज अ फॉर्मल बॉडी of rules to govern the operation of the organization
एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड अपॉन द रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, orally नहीं होगा, it is based upon return documents. Then here personal relations will dominate or impersonal relations. So we are talking about bureaucracy. So here impersonal relationship between organization members and the clients. So यहाँ पे क्या होगा, impersonal relationship होगा, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि आप पर्सनल रिलेशनशिप को लाए. देन नेक्स्ट विल बी, अब जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है वो किसके बेस पे होगी, आपकी एबिलिटी के बेस पे होगी, टेक्निकल नॉलेज के बेस पे होगी, ना कि प्रमोशंस के बेस पे होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई आपको कोई करप्शन के भी आप पे नहीं हो सकता. ब्यूरोक्रेसी इज ट्रांसपेरेंट. देन नेक्स्ट विल बी, यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होती है, और जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से क्या होगा, प्रमोशंस होते जाएंगे. यहाँ पे सैलरी फिक्स भी हो सकती है, ठीक है, सैलरी फिक्स होगी. यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड सुपर सबऑर्डिनेशन एग्जिस्ट. सो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेनिंग होती है. तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है, स्टाफ ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू द वर्क. यहाँ पे क्या, होनेस्टी चाहिए, कुछ एलिमेंट्स और होनी चाहिए, जैसे कि होनेस्टी, यानी कि ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज भी होती है यहाँ पे. So modern bureaucracy is manifestation of formal rationality. So similar way, Max Weber used rational approach for ideal typical bureaucracy. So here you can write about the Max Weber ideas of ideal typical bureaucracy. So ideal typical bureaucracy is the highest degree of efficiency. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हायर डिग्री ऑफ एफिशिएंसी है, मतलब ये क्या है, रेशनल है, दैट इज रेशनल, मोस्ट रेशनल. इट इज सुपीरियर इन फॉर्म, प्रिसीजन, हाँ ये क्या होगा, सुपीरियर होगा, यहाँ पे प्रिसीजन होगा, यानी एक्यूरेट आइडियाज होंगे. स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब बैलेंस चाहिए होगा. देन नेक्स्ट इज स्ट्रिजेंसी ऑफ डिसिप्लिन, और जो डाटा है वो क्या होना चाहिए, रिलायबिलिटी कंसेप्ट होनी चाहिए. इट मेक्स पॉसिबल अब पर्टिकुलरली, इससे क्या होगा, ये क्या कर देगा, इट मेक्स पॉसिबल अ पर्टिकुलरली हाई डिग्री ऑफ कैलकुलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इससे क्या होगा, अगर हमारे पास प्रिसीजन होगा, स्ट्रिंजेंसी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन होगा, तो इससे हम क्या बोलेंगे कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. So it is more intense, having intensive efficiency and the scope of operation. So all administrative tasks can be done, but one can see a fundamental ambivalent in attitude towards them. So he highlighted problems, advantages, and reservation. For example, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, रेड टेपिज्म का एग्जांपल ले लेते हैं. तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे ये नहीं है कि रेड टेपिज्म मतलब ये डर से इन्होंने रिलेट किया. इट वाज दैट rationalization that dominates all aspects of bureaucratic is a threat to individual. तो यहाँ पे बस एक क्रिटिसाइजेशन है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम रेशनलाइजेशन की कंसेप्ट को लेते लेते इंडिविजुअल लिबर्टी को पे थ्रेट बन जाए. Because our constitution is talking about freedom, so here also liberty concept came. So इन्होंने क्या किया, he described bureaucracy as escape proof and practically unshatterable, and he also concluded that future belong to bureaucratization, and his depiction of advantages of bureaucracy is a part of ideal typical image of the way it operates. Thus, it is purposeful exaggeration of rational characteristics of bureaucracy, and such model is useful for heuristic purposes and future स्टडीज. सो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो आइडियल टिपिकल ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट हमने लिया है उसमें ये मोस्ट फोकस कर रहा है
रेशनल अप्रोच पे, जिसमें क्या होगी, हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी होगी। उसके बाद जो एटीट्यूड है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड फ्यूचरिस्टिक स्टडीज के हिसाब से ये लेके चल रहे हैं। तो इनके जो आइडियाज है वो मॉडर्न इकोनॉमिक एंड द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी यू आर प्रिपेयरिंग, आपको इजिली दिख पा रहा होगा कि ये सारे जितनी भी बातें इन्होंने बोली ये सारी की सारी एप्लीकेबल है। सो इन्होंने इसलिए क्या ले लिया, एक ब्रोडर व्यू ले लिया जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल कंसेप्ट को शो कर रहा है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि एक इंडिविजुअल के बारे में कहेंगे, ये एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव फुल सोसाइटी के बारे में इस कंसेप्ट को लेके आ रहे हैं। सो वेबर सेज देयर इज नो पॉसिबल अल्टरनेटिव एंड इज indispensable। अब indispensable क्यों होगा, because the choice is only between bureaucracy and dilettantism in the field of estimation. So here the keyword is dilettantism in the field of एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक सिंगल चॉइस, तो ये नहीं है कि आप दूसरी चॉइस को भी पकड़ सकते हो, तो अदर चॉइसेस आपके पास नहीं है। और अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या ले सकते हैं कि इनका बिलीव क्या था, सोशलिज्म के अंदर था। गुड। तो इन्होंने सिर्फ वही वाला जो आइडिया कार्ल मार्क्स और पीछे के थिंकर्स ने लिया था, वही आइडियाज ये भी प्रमोट कर रहे हैं इन द ब्यूरोक्रेटाइजेशन। सो इन्होंने क्या किया, वेबर बिलीव इन केस ऑफ सोशलिज्म देयर वुड बी इंक्रीज इन ब्यूरोक्रेटाइजेशन because in order to increase efficiency compared to capitalism, importance of bureaucrats increase, because in capitalism there is some owners, but in socialism the top level are bureaucrat owners. That is why he created leadership and individual freedom in the bureaucratic world which is best represented by। सो इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर तो हमें चाहिए ही चाहिए। उन्होंने ये लर्निंग्स कहाँ ली, कैपिटलिज्म से ली। उसके रिगार्डिंग इन्होंने, जब हम वेलफेयर की बात करने पे आ जाते हैं तो एक कंसेप्ट आता है सोशलिज्म का, इन्होंने उसको इस टॉपिक से रिलेट कर दिया। सो नेक्स्ट वी कैन लर्न वन कंसेप्ट, व्हाट इज एब्सोल्यूटिज्म। So absolutism, it is important part in models of political evolution. So यहाँ पे मैक्स वेबर ने भी क्या किया था, एक एब्सोल्यूट स्टेट को लिया है एज अ प्रोग्रेसिव स्टेज बिटवीन फ्यूडलिज्म एंड मॉडर्न कैपिटलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या हुआ, जहाँ पे लैंड ग्रांट्स डोमिनेट कर रहे हैं। मॉडर्न कैपिटलिज्म आप रिलेट कर सकते हो, दैट इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। So I hope you understand it very well. So I will dictate some previous year questions as it is based upon our topic of discussion. So you can write back these answers as well. So first question is, which concept did Weber use to analyze the forms of legitimate domination? I hope you understand it. Then you can write back. The next question is, how does Weber use the notion of ideal types in the theory of bureaucracy? Then third will be, power and authority go together. Explain the various types of authority also. Discuss Max Weber ideal type and the role of authority in bureaucracy. The next will be, write a short note on authority. So all the questions I dictated already discussed in our lecture. I hope you understand it well. And if not, then you can revisit again also. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe our channel. Thank you.